Okay, so in this video we'll take a look at the muscles of the scapular region. Now, what is the scapular region? It's the shoulder region. With the muscles which are associated to or related to the shoulder region, these are called the muscles of the scapular region. Now, there are 6 muscles of the scapular region, excluding the deltoid, जिसको हम deal करेंगे बाद में in the arm region. The other 5 are the Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Teres major and Subscapularis, right? Deltoid भी एक scapular region का ही मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, बट हम उसको यहाँ पर उसके अटैचमेंट्स को नर्व्स वगैरह को स्टडी नहीं करेंगे. विल deal with it in a separate video, right? So let's take a look at each of these muscles. Okay, so the first is going to be the Supraspinatus muscle. अच्छा, इनको समझने के लिए we should be revising the anatomy of humerus as well as scapula bone, क्योंकि attachments इन दोनों के association में हैं, but I will not do that because I have already taught you those two bones in separate videos. So we have a supraspinous fossa on the back of scapula. So वहाँ से origin होता है supraspinatus muscle का, उसके medial 2/3 से, and it gets inserted onto the upper impression on the greater tubercle of humerus. There are 2 tubercles, greater and lesser tubercles on the humerus bone, and उसके upper impression of the greater tubercle पे किसकी attachment होती है? Supraspinatus की. The next muscle is going to be the infraspinatus muscle, coming from the medial 2/3 of the infraspinous fossa of the back or the dorsum of the scapula, right? And it's getting inserted onto the middle impression on the middle impression of the greater tubercle of humerus, right? वो था upper impression पर, middle impression पर of the greater tubercle of humerus, just like the supraspinatus. The next is going to be the teres minor muscle. It is a bit different from the other two. It's coming from the dorsum surface of the lateral border of the scapula, right? So उसके lateral surface से, lateral border से, उसके lateral border के dorsal surface से अपर 2/3 से ना, अपर 2/3 है, ये है लोअर 1/3 और ये अपर 2/3. अपर 2/3 से किसकी ओरिजिन हो रही है? टीरिस माइनर की. लोअर 1/3 से होती है टीरिस मेजर, हम बाद में देखते हैं. सो फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द डोर्सल सर्फेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला वी हैव द ओरिजिनेशन ऑफ व्हाट? टीरिस माइनर मसल, जो कि कहाँ जाकर अटैच हो रहा है? ऑन द लोएस्ट इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस. सो सी दीज 3 मसल्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर. इनकी एक जैसे ही अटैचमेंट्स है. द फोर्थ वन इज द टीरिस मेजर मसल. एज यू कैन सी इट्स कमिंग फ्रॉम द लेटरल द inferior 1/3 of, or the lower 1/3 of the lateral border of the dorsal surface of scapula, and it's getting inserted onto the medial lip of bicipital groove of humerus. So basically होता ये है कि कहा ही जाता है कि एक mnemonics है कि there is attachment of the latissimus dorsi in the floor of the humerus, right? So it's like lady between the 2 majors, right? Just a mnemonic. So on the medial lip पे अटैचमेंट हो रही थी टीरिस मेजर की, ऑन द लेटरल लिप किसी और मेजर की अटैचमेंट होती है, एंड देन द मिड इन द फ्लोर ऑफ द bicipital groove of humerus we have the attachment or the insertion point of latissimus dorsi. So in this way you can just recall it for mnemonic purposes. So the teres major is getting inserted onto the medial lip of bicipital groove or the intertubercular sulcus of humerus bone, right? The fifth one and the final muscle of the scapular region is the subscapularis muscle. अभी तक जितने muscles थे वो सब dorsal surface से rise करते थे, वहीं पर ही attachment ले रहे थे, but this muscle is coming from the ventral surface or the ventral fossa of the scapula, that is the subscapular fossa, right? And this muscle is subscapularis. Okay, so from the middle to third of the subscapular fossa it is originating and it's getting inserted where? On the lesser tubercle of humerus. See, in सबके attachments humerus पर बहुत ही आसान से attachments है, that's why they are all in the scapular or the shoulder region. So that was all about the attachments of these, some of the muscles of the scapular region. So this whole is the scapular fossa में, subscapular fossa में प्यारा सा subscapularis muscle, बहुत ही bulky muscle होता है और ventrally placed होता है, जबकि बाकी सारे dorsally placed हैं. And let's take a look at the nerves lie of each of these muscles. So suprascapular nerve ही supraspinatus और infraspinatus दोनों को ही innervate करेगी. teres minor will be innervated by the axillary nerve, और यही axillary nerve basically deltoid muscle को भी supply कर रही होती है. So we should be knowing this thing, very important. Axillary nerve supplies deltoid as well as teres minor muscle, जबकि जो teres major muscle है वो along with subscapularis अपर जो के subscapularis में बहुत ही हमने देखा कि काफ़ी बल्कि मसल था. So that is being supplied by upper and lower subscapular nerves as well. ठीक है, दोनों ही सप्लाई कर रही होती हैं, और उनमें से लोअर वाली होती है अपने साथ teres major को भी सप्लाई कर रही है. जस्ट से कि जो मेजर्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं, राइट? सो आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ mnemonic. ओके, सो वो फिर दूसरे मसल्स की सप्लाई ले लेते हैं, दैट इज subscapularis. सो उसकी लोअर डिवीजन से, उसकी जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है वहाँ से teres major सप्लाई ले देगा, जब जो teres minor और बड़ा शरीफ से है वो सिंपली डेल्टॉइड वाले से लेगा, दैट इज एक्सिलरी नर्व. उसकी इन दोनों की अपनी कोई सप्लाई नहीं है. ओके, सो अगर फंक्शन देखा जाए तो ऑल दिस मसल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रोटेटेड कफ और द मस्कुलोटेंडिनस कफ अराउंड द शोल्डर जॉइंट. सो ये जो 4 मसल्स हैं, कौन कौन से? सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सबस्कैपुलारिस एंड teres minor, सबके टेंडन्स जो है अराउंड देयर अटैचमेंट्स एक वी कैन से फ्लैटेंड सा टेंडन बना देते हैं, फ्लैटेंड सा कफ बना देते हैं अराउंड द शोल्डर जॉइंट, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट और मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी, मेंटेन इट्स स्ट्रेंथ
So that's the dislocation now, because we know that it's quite a mobile joint, तो इस पर dislocation को prevent करने के we have this cuff as a safety. और यही इन muscles का major function भी है, that they stabilize the shoulder joint, right? और इसके अलावा अगर एक special function देखा जाए तो it is for the subscapularis, which since it is present ventrally, so it acts as a medial rotator as well as an adductor of the arm region as well. So this was all about the functions and nerve supply of the muscles of the scapular or the shoulder region. So I hope it was helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourselves.